dear students. Today we will do MCQ for mathematical functions in Java. Okay. Yesterday I was telling about the availability of the book. Okay. So as I have given in the short video, book is exactly according to the board pattern. Okay. Many solved and unsolved programs are there. Theory is also up to mark, which you need in the for the board exam preparation, and all the definitions are written in such a way that you don't have to mug it up a lot. You just have to study it. Short definitions are there. Okay, so regarding the availability of the book, some were asking, so soon I will be providing you the address from where to pick up, or either it will be sent to you. So if you demand, then I will ask your address only after 10th. Okay, after 10th, round about by 15th, I will be giving you the exact information. Now let us continue with the MCQ. देखो, first one, MCQ related to the chapter Mathematical Library Methods in Java, means math functions. Which of the following will give 5.0 if a is equal to 5.6? अगर a का वैल्यू 5.6 है तो कौन सा इसमें आंसर देगा 5.0? मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट सील ए, मैथ डॉट राउंड ए और मैथ डॉट रिंट ए. So it will be math dot floor, because floor function decreases the value. It does the rounding but only by decreasing. So 5.6 will be decreased and made 5.0. Second one, what will be the return type of the method math dot round? Round का return type क्या होगा? Int, double, float, long. So it will be double. Mathematical functions gives the double data type as their return type. Okay. There are some exceptions obviously, like max min gives the output according to the input. Means if input is in double type, then output will also be in double type, and if input is in integer type, then max min can give the answer in integer type also. Then next one, third one, math dot square root math dot abs minus 144 will return which value? So start from the inside, math dot abs minus 144, it will become plus 144, or math dot square root of 144, 12.0. So A is the correct answer. Fourth one, what will the function math dot cube root, CBRT means cube root, math dot max 27,64 return? So max will find out the maximum value, that is 64, and cube root of 64. So what it will be? 4.0. Option A is correct. Now number 5, what will be the range of value the function math dot random into 10 return? Math dot random into 10. तो इसका आंसर क्या होगा? What does math dot random returns? Between 0 and 1, any decimal number. Okay, and if you multiply with 10, then what can be the possible outcomes? See, first option is 0.0 to 9.99, then B 0 to 1, C between 0.0 and 1.0, and D between 0 and 1. So generally the math random function gives the answers between 0.0 and 1.0. Okay, so over here we are multiplying with 10. So guess any answer of random function, any answer. Okay, suppose it returns 0.9876, something like this. Okay, and then we are multiplying with 10. So what is it going to become? 9.876, like this. Okay, similarly if we are getting 0.01234 into 10, it will become 0.1234. So what can be the possibility? So according to the calculation, option A is the correct answer. A 0.0 to 9.999 means it will go up to 15 digits. Just I have written 0.999. So like this it will give the answer. Now sixth one, what will the function math.max 5, math.mean 10, 8 return?
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रन, इसको रन करो, मैथ डॉट मीन 10,8, तो 8 आंसर होगा। फिर मैथ डॉट मैक्स 5,8, तो आंसर क्या होगा 8। अब इसमें देखो सारा इनपुट जो है इंटीजर्स है, अभी बोल रहे थे ना, व्हेन इनपुट विल बी गिवन इन इंटीजर फॉर्म टू मैक्स मीन फंक्शन, आउटपुट विल आल्सो कम इन इंटीजर फॉर्म ओनली, तो इसका आंसर भी ए होगा, 8 होगा, बी नहीं होगा 8.0। ठीक है, यहाँ पर इनपुट्स में 0.0 लगाओगे ना, तब इसका आंसर 8.0 होगा। देखो नंबर 7, व्हाट विल द फंक्शन मैथ डॉट मीन 10, मैथ डॉट पावर 2,3 रिटर्न। तो मैथ डॉट पावर 2,3 क्या होगा, 2 to the power 3 मतलब 8.0, एंड मैथ डॉट मीन 10, 8.0। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 8.0, ए नॉट बी, 8 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो पावर फंक्शन जो है ये तो डेसिमल में आंसर रिटर्न करेगा ना, डबल टाइप में, सो इट विल नॉट रिटर्न 8, इट विल रिटर्न 8.0, तो 10, 8.0। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 8.0 होगा, इसलिए ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 8, चूज द करेक्ट जावा एक्सप्रेशन फॉर द मैथ एक्सप्रेशन SI इक्वल्स टू PRT बाई 100, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। सो व्हाट विल बी द करेक्ट जावा एक्सप्रेशन? सी इट, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100.0, बी है P इंटू आर इंटू 2 इन ए ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 100.0, सी है बोथ A एंड B, और डी नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता है, बोथ होगा, नहीं होगा। देखो PRT यहाँ पर ब्रैकेट में नहीं लिखे हैं, तो ये B नहीं, A होगा आंसर, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100.0। नंबर 9, मैथ डॉट पावर 625, 0.5 will result in what? Okay, you have to see this, पावर 0.5 है, तो क्या आंसर होगा? कैन यू गेस द आंसर? 25.0 और 25, नन और 1.0। So what will be the output? Can you guess 625, 0.5? It will give 25.0 as the output, first one, not 25. Okay, none is not possible, 1.0 is also not possible, so answer will be 25.0. Next one, number 10, double x equals to 3.14, int y equals to int of math dot floor x. So math dot floor, what it will do, 3.4 will become 3.0, and int I have used type conversion, so it will get converted y equals to 3, not 3.0. ठीक है, then system dot out dot print, so 3 will be printed, so B will be the correct answer, option B. Then number 11, assertion, math dot random method always returns the output in double type. ठीक है, करेक्ट है assertion, डबल टाइप में ही रिटर्न करता है। रीजनिंग, बिकॉज ऑल मैथ फंक्शंस रिटर्न टाइप इज डबल, रीजन भी करेक्ट है, सारा मैथ फंक्शंस का रिटर्न टाइप डबल है, सो वी विल हैव ए एज द करेक्ट आंसर। assertion and reasoning both are correct, and reason is the correct explanation. Okay. And then number 12, assertion, math dot max and mean methods can return the value integer and double type both. इंटीजर और डबल दोनों में वैल्यू रिटर्न कर सकता है, सो इट इज़ करेक्ट। रीजनिंग, इट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर्स गिवन टू देम एज इनपुट। तो अभी एक्सप्लेन किए इसको, पैरामीटर्स जो दोगे वही उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो assertion एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये सही है। ओके, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट MCQs, so you can continue
You can continue studying the MCQs one by one as I am sending the videos. Don't collect it for the last moment, otherwise there will be no benefit of making so many videos on MCQs for each chapter. Okay, please study it as I keep on uploading every day. Okay, thank you students.